આપણે અમેરિકા પીવડાશ Aconite. Stupid, bruised pain in the head. આપણે confusion કર્યું last time. Stupid, bruised pain in the head with bruised feeling in all the limbs after 14 hours. Feeling of fullness and heaviness in the forehead. 3 mark symptom છે એટલે લગભગ બધા પ્રોવરમાં આવું જોવા મળ્યું છે. Feeling of fullness and heaviness in the forehead as if an outpressing weight lay there, and as if all would be forced out at the forehead after 1/4 hour, means after 15 minutes. And that is also observed by staff and gross. So this symptom is belong to the observation of staff and gross. Stupefying, drawing in, pressing in the left temple, staff and gross. Feeling as if someone drew him up by the hair, कि कोई बालों से खींच रहा है, ऐसा उसको फीलिंग हो रही. Number 30, symptom number 30, semilateral drawing in the head. ड्राइंग का मीनिंग होता है कोई खींच रहा हो, ऐसे खींचने जैसा. टू ड्रॉ मीन्स खींचना. जैसे हम बोलते हैं कि ड्राइंग कर रहे हैं, यानी कि कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम पेंसिल को खींचते हैं. तो ड्राइंग मीन्स खींचना, लाइन खींचना या बालों को खींचना. Aching pain in the temporal region afterwards, also in jerks in the occiput. Lastly, confusion. दिमाग में ऐसे झटके आते हैं ऑक्सीपुट रीजन में, और आखिर में कंफ्यूजन ऑफ द हेड एंड कॉन्ट्रैक्टिव पेन. रूकेट ने ये ऑब्जर्वेशन किया. कॉन्ट्रैक्टिव पेन इन द फोरहेड, ये जो बाजू में है वो सब ऑब्जर्वर के नेम है, कौन से डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया. टेंशन ऑल ओवर द फोरहेड. On stooping, her forehead feels very full as if all would come out after 25 hours. 25 घंटे के बाद, प्रूविंग के 25 घंटे के बाद ये सिम्टम आया कि झुकने से फोरहेड भरा भरा सा लेता है और ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाएगा, सिर में से कुछ बाहर आ जाएगा. Headache as if the eyes would fall out of the head. आंखें बाहर आ जाएगी ऐसा महसूस होता है हेडेक में. आफ्टर 1.5 hour. हेडेक एज इफ द ब्रेन प्रेस डाउन, ब्रेन बाहर आ जाएगा, यानी कि ये सब कंजेशन के सिम्टम है. हेडेक एज इफ हियर एंड देयर अ पार्ट ऑफ द ब्रेन वेर लिफ्टेड अप, की पार्ट कुछ ऊपर खुला हुआ है, विच इज इंक्रीज्ड बाय स्लाइट मूवमेंट, और थोड़े से हिलने से वो और ऊपर जाता है. Even if drinking and speaking after 1.5 hour. Sorry, after half hour. Speaking increases the headache. बोलने से दर्द होता है. Shooting, throbbing headache as if an ulcer were inside, which sometimes prevents speaking. Throbbing headache है और ऐसा लगता है कि अंदर से अल्सर हो गया है और इससे बोला भी नहीं जाता. Sometimes a fine shooting, sometimes throbbing, sometimes aching headache in the forehead when walking, relieved by sitting. A fine throbbing here and there in the head. Headache, a throbbing in the left side of the forehead, whilst strong beats occur in the right side by fits. Fits यानी कि थोड़े थोड़े, जैसे कन्वर्जन को हम फिट कहते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े अंतर पे झटके आते हैं, उसी तरीके से हेडेक के एपिसोड ऐसे आते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग बीट स्पेशली राइट साइड होता है. In the left side of the head, pain is if head were compressed.
लेफ्ट साइड भी दर्द होता है, और उसमें कैसा सेंसेशन है कि जैसे सिर दबा हुआ है, लेफ्ट साइड से प्रेस हो रहा है। हेडेक इज इफ द स्कल वेर एक्सटर्नली constricted with a ligature and drawn tightly together. Very painful, sharp, expressing headache above the forehead. Out pressing pain in the forehead. लेफ्ट साइड से दबा हुआ, फोरहेड से बाहर निकला हुआ, और राइट साइड पे स्ट्रॉन्ग बीटिंग महसूस हो रहा है, कोई मार रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। Tearing pain in the left temple. In the left temple, shooting pain by jerks. Stitches pass through the temple into the head. Shooting, beating headache in the temples. Shooting by jerks in the head, especially in the forehead. Tearing pain in the left temple with roaring noise in the ears. Feeling of contraction of the brain under the forehead after 20 hours. ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन की फीलिंग. Squeezing tensive for headache close behind the orbits. A pinching and squeezing in the forehead as if it were in the bones. She feels ill as though about to go mad. Pinching यानी ચીટી કાટના, બરાબર છે, કોઈને આપણે ચીમટો ભરીએ. Pinching and squeezing sensation in the forehead as if it were in the bones, जैसे bones में कोई ऐसा कर रहा है, squeeze हो रहा है bone, ऐसा महसूस हो रहा है. She feels ill as though about to go mad. बीमार है इसलिए उसको लगता है कि कहीं वो पागल ना हो जाए. A squeezing in the forehead above the root of the nose, as if she would lose her reason, as if wrong in the forehead, aggravated by walking in the open. A feeling of crepitation like bending gold tinsel to and fro in the temples, nose, and forehead. Shooting and somewhat aching headache above the orbits towards the superior maxilla, which causes nausea. हेडेक में सुपीरियर मैक्सिला से ऊपर, ऑर्बिट के अराउंड, एबोव, ऑर्बिट के एबोव हेडेक होता है और उसमें नोजिया हो रहा है, तो ये माइग्रेन की अंडरस्टैंडिंग आ गई. Or as usually occurs during the vomiting caused by the MAT, by an MAT. उल्टी होने वाली दवाइयों से या ऐसी कोई चीजों से जिससे उल्टी हो जाए, वो वॉमिट, उससे वॉमिटिंग भी हो सकती है. Aching, shooting, sick headache above the orbits and down to the upper jaw. Feeling as if something were drawn out of the head, whereby her eyelids, upper eyelids, were drawn upwards, ऊपर खींची हुई हो ऐसा लगता है. सब सब जगह पे कैसा है, ड्रॉइंग पेन है, बराबर खींचा हुआ. Twitching, tearing pain in the occiput, jerking, shooting, drawing, tearing pain in the upper part of the right side of the head, shoot in the occipital lobe bone, creeping on the left side of the head as from a brush, feeling, feeling as if a ball rose from the umbilical region and spread a cool air in the vertex and occiput. Burning headache as if the brain were moved by boiling water, जैसे उबला हुआ पानी अंदर भरा हुआ हो या मूव हो रहा हो, उतना बर्निंग हो रहा है. Heaviness of the head
pain in occiput and neck, headache, roaring in the ears, coryza, and colic, especially in the morning as if a chill had been taken after profuse perspiration. This it was the effect of an actual chill, not as from a chill. बराबर ये चिल से एक्चुअल चिल से हो रहा है क्या है कोराइजा roaring in the ears, headache, colic, morning में as if a chill had been taken after profuse perspiration. जैसे profuse perspiration के पास कैसी ठंडी लगती है उस ठंडी में उस एक्चुअल ठंडी में ये सब चीजें होती है एक साथ तो कान में आवाज आना सर्दी कॉलिक हेडेक सब कुछ सुबह में हो जाए Towards evening, she got very hot in the wall head, after which there occurred tenderness of the wall head, especially the forehead, lasting all the evening. पूरी शाम ऐसे जाती puffy face and forehead वो ब्रैकेट में है उसका मतलब ये है कि वो डाउटफुल सिम्टम bluish face black lips bluish face black lips जब हम पहले की प्रैक्टिस करते थे तो उसमें इन चीजों को काफी महत्व देते थे ब्लूइश फेस एंड ब्लैक लिप्स distortion of the facial muscles very widely dilated pupils obscuration of the sight repeated blindness with undiminished power of speech distortion of the eyes distortion of the eyes and grinding of the teeth about midnight the demented and epileptic function subject to spasms. On opening the eyelids, pain in the interior of the eye, as if it would be pressed out, which pain spread over the region of the eyebrow into the interior of the brain. Dilated pupils. Immediately मतलब कि वो जैसे ही दवाई दी तो तुरंत ही dilated pupils हो गई His eyes are staring immediately, desire for light, longing to look into the bright light. प्रकाश चाहिए उसको. Black spots hovering before the sight. काले काले धब्बे दिख रहे हैं. Misty before the eyes. ये भी उसी तरीके का एक सिम्टम. Misty before the eyes. दाने आंखों के आगे दाने दिखना जो देख रहे हैं हमने उसमें She does not see distinctly with giddy feeling. सही से नहीं दिखता है और साथ में चक्कर भी आ रहा है. Photophobia after 6 and 12 hours. Probably an alternating symptom with 81. 81 मतलब desire for light. क्योंकि photophobia means fear of light है या aversion to light है उससे दिक्कत हो photophobia. जबकि desire for light मतलब कि लाइट चाहिए ये तो दोनों एक दूसरे से विरुद्ध के सिम्टम हुए तो ये दोनों प्रोबेबली अल्टरनेटिंग सिम्टम होगा लेकिन दोनों प्राइमरी इफेक्ट्स हैं एकोनाइट की 85 एक्यूट विजन dryness of the upper eyelids which causes a sort of aching in the right eyes for 5 hours heaviness of the eyelids they seem to him too heavy on raising them heaviness of eyelid है जैसे जलसेनियम में the eyes feel cold in the open air very very painful inflammation of the eyes chemosis sensation in the eyes as if they were greatly swollen after 5 hours the eyes are closed with a jerk as in irresistible sleepiness जैसे नींद आ जाती हो
हम उसको रोक नहीं सकते। ऐसी नींद में जैसे आंख बंद हो जाती है, उसी तरीके से एक झर्क के साथ आंखें बंद हो जाती। Protruding of eyes, that is also found in exophthalmia, thyroid diseases. Aching of the eyes, most observable when looking down and when moving the eyes to and fro at the same time with heating them. Aching and burning in left eye and over the eyebrows. Hard red swelling of the right upper eyelid with tensive sensation, especially in the morning. Ophthalmia with discharge, which is so painful and horrible that he longer for death. दर्द इतना है, डिस्चार्ज इतने आते हैं, इतना दर्दनाक कंडीशन है कि वो चाहता है कि उसकी मौत हो जाए। Constant dull humming before the ears, followed by fainting. हमिंग साउंड आना कानों दोनों ईयर्स में, और उसके बाद पेंट हो जाना। पेन इन द जाइगोमेटिक प्रोसेस एज फ्रॉम एन इंटरनल अल्सर देयर, ये ईयर्स की पैथोलॉजी या फिर एनाटॉमी है, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। उसमें दर्द है जैसे कि अंदर अल्सर हो गया है। रिंगिंग इन द ईयर्स, कान में आवाज आना फिर से, अलग अलग आवाज, हमिंग, रिंगिंग। He feels as if something lay before the left ear, लेफ्ट कान के आगे कुछ रखा हुआ हो ऐसा फील होता है। Tickling sensation in the right ear as if a small worm crept in. Tickling sensation, right ear. Tearing in the left ear. Pain behind the left ear like a pressure with the thumb. किसी ने थंब रख के दबाया, थंब से दबाया हुआ हो, ऐसा लेफ्ट ईयर के पीछे दर्द होता है। Sensation as if the cheeks were swollen to double their size. दोनों चिक्स में सूजन आ गई हो ऐसा सेंसेशन आता है, जैसे कि उसकी साइज डबल हो। तो ये पूरी जो स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन वाली जो कंडीशन है अलग अलग पार्ट्स की, तो वो एक उसके लिए अलग अलग डिजीज प्रोसेसेस हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि हम उस होम्योपैथी को ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे सिम्टोमेटोलॉजी एंजियोएडिमा में होती है, फिर अर्टिकेरिया में आती है, फिर सिंपल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में आते हैं, या फिर किडनी डिसऑर्डर्स, हार्ट ड्रॉपसी, इन सब में ये स्वेलिंग एंड पेन इस तरीके का आ सकता है। Pain in the maxillary joint behind the zygomatic process when chewing. During the perspiration, a burning pain shot several times into the left ear and upper maxilla. पर्सपिरेशन के दौरान एक बर्निंग पेन बार बार होता रहता है लेफ्ट ईयर एंड अपर मैक्सिला। पर्सपिरेशन ऑन द चीक ऑन विच शी लाइज इन बेड, जिस तरफ वो सोया हुआ हो उस तरफ चिक पे पर्सपिरेशन आना, काफी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। क्रीपिंग पेन ऑन द चिक्स, सेंसेशन ऑफ stupefying compression of the root of the nose, रूट ऑफ द नोज पे यहाँ पे कंप्रेशन का सेंसेशन लगता है। एपिस्टैक्सिस, perspiration on the upper lip under the nose, itching, pimples on the upper lip, shooting jerks in the lower jaw, shooting pain in various teeth, aching toothache in the left upper jaw, very penetrating pain in the jaws as if they would fall off, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, इतना दर्द जौ में है। In the tongue and jaws are creeping and burning so that the teeth
सीम लूज, ऐसा लगता है कि दांत लूज हो गए, ऐसा दर्द हो रहा है, क्रिपिंग हो रहा है. Smarting sensation in the tongue deeply towards its tip, penetrating fine stitches in the tip of the tongue. In the tongue, a burning of long continuance. These and the following symptoms were experienced by Stoic himself after placing a small quantity of the root on his tongue. डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में वो टंग पे रखा और उसी से ही ये सब सिम्टम डेवलप हुए जो स्टॉक के हैं. The rest of his symptoms were observed on patients to whom he gave the drug. Momentary, बराबर यहाँ पर ये जो सिम्टम है स्टॉक का है. Momentary flying stitches in the tongue with flow of saliva, coldness and dryness of the mouth without thirst, dry dry feeding first of the lips, then of the inferior of the mouth. पहले lips में dryness, then interior of the mouth में dryness, with heat rising up from the chest towards the head. उसके साथ साथ गर्मी चेस्ट में से सिर में जा रही है, हीट बढ़ रही है, without redness of the cheeks. These parentheses refers, यानी कि जो काउंस में ये लिखा है redness of the cheeks के बिना, वो parentheses refers to a person who when in good health had generally great redness of the cheeks. काउंस में क्यों लिखा? क्योंकि ये इस उस पर्सन के लिए है कि जो काफी अच्छी हेल्थ में होता है तो उनको ग्रेट रेडनेस ऑफ द चिक्स होता है, which was therefore homeopathically removed as aconite almost always produces heat of the cheeks. ये होम्योपैथिकली रिमूव हो जाता है जैसे ही हम एकोनाइट इसको देते हैं, क्योंकि एकोनाइट हीट ऑफ द चिक से प्रोड्यूस करती है, हीट ऑफ द चिक. Transient paralysis of the tongue, dryness of the interior of the tongue immediately. On the middle of the tongue, sensation of dryness and roughness without thirst, feeling of dryness in the fore part of the mouth, आगे का हिस्सा, fore part of the mouth, feeling of soreness of the orifices of the salivary glands as if they were excoriated, जैसे उसका छिद्र बड़ा हो गया हो, सलाइवरी ग्लैंड्स का ऑरिफाइस बड़ा हो गया, उस तरीके का सॉरनेस की फीलिंग आती है उस सलाइवरी ग्लैंड के ऑरिफाइसिस में. इन द थ्रोट a scraping with difficult deglutition, drawing from the side of the throat to find the ear, drawing from the side of the throat to find behind the ear. गले में जो तकलीफ है वो कान के पीछे तक महसूस हो रही है. On the left side of the throat, internally on a small spot shooting choking when not, but especially when swallowing and speaking. When not swallowing and speaking, ऐसा है सिम्टम. लेफ्ट साइड ऑफ द थ्रोट में एक स्मॉल स्पॉट है जिसमें शूटिंग चॉकिंग हो रहा है, लेकिन वो खाता है, निगलता है या बोलता है तब नहीं. स्पेशली आफ्टर 1/4 of an hour it passed to the right side, लेफ्ट से राइट में आ गया. whilst the painful sensation in the left side disappeared, it remained there 1/4 of an hour and went off entirely. और जब राइट साइड पे आ जाता है तो लेफ्ट साइड का सेंसेशन, पेनफुल सेंसेशन डिसअपियर हो जाता है. वहां पर वो फिर से 1/4 आवर रहता है, फिर वहां से पूरी तरीके से चला जाता है. प्रिकलिंग सेंसेशन सडन एंड वायलेंट ये दवाई है, तो इसीलिए सिर्फ 15 मिनट होता है फिर वापस बंद होता है. प्रिकलिंग sensation at the back of the tongue
as from paper with flow of saliva. जैसे मिर्च रखी हुई हो उस तरीके की prickling sensation आता है. With flow of saliva, creeping in the fossils. Fossils यानी कि टॉन्सिल के आगे का हिस्सा, उसमें creeping sensation, pain, fine, fine shooting sensation at the back of the throat, as from the prickly hairs of the dog hip, burning and fine shooting pain in the back of the throat, contracting feeling in the back of the throat, as from something astringent, paper-like taste in the mouth, paper-like taste in the mouth, immediate local effect. Along with deficient appetite, देखो अगर कभी आपने ये जो इमीडिएट इफेक्ट वाले सिम्टम वो अगर आपने कभी हायर पोटेंसी में जरूरत से ज्यादा पोटेंसी में अगर एपोनेट दे दी तो ये इमीडिएटली वाले सभी सिम्टम डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ये उसकी तुरंत वाली एक्शन, प्राइमरी एक्शन जो हायर पोटेंसी में तुरंत दिखती है. Along with deficient appetite, bitter taste in the mouth, with pains in the chest and under the short ribs. Bitter taste, nasty fishy taste as from stagnant putrid water. पड़ा हुआ पानी में जब बास आने लगती है उस तरीके के टेस्ट मुंह में आते. She felt as if the wall mouth filled with the air of the taste of the rottenness. Sourish taste in the mouth with loss of appetite. What formerly had a good and strong taste is now tasteless to him. પેલા જેનો મસ્ત ટેસ્ટ આવતો હતો હવે એનો ટેસ્ટ જ નથી. Sweetish water rose up like water brush, at the same time roaring in the ears. Belching up of sweetish water with nausea, scraping from the scorbiculus spordis up into the throat with nausea and qualmishness. Qualmishness means also nausea. Qualmishness in the scorbiculus spordis as if water would come into her mouth. Empty eructation, ineffectual effort to eructate. He wishes to eructate but cannot. Eructation करना है लेकिन नहीं होता. Thirst for beer, but when she has drunk it, it oppresses her stomach. बियर पीना है लेकिन जब वो लेडी पीती है तो फिर उसका स्टमक खराब हो जाता. She will not eat anything. वो ब्रैकेट में है यानी कि डाउटफुल सिम्टम. Nausea and vomiting, thirst, general heat, and profuse sweat with diuresis. She vomits lumbricy, vomiting of green bile. Lumbricy means वो a worms, vomiting of worms, some list. Vomiting of mucus mixed with blood for three or four successive days. Vomiting of blood. Qualmis means against nauseative feeling. Qualmis, sick in the scorbiculus spordis. Worse when sitting, going off almost when walking, immediately after taking it. Disgust and sinking squalmis feeling. Long continued disgust, anorexia. Disgusting situation, patient के लाइफ में होती है. Inclination to vomit on walking in the open air. Inclination to vomit, at first in the scorbiculus spordis, then beneath the sternum, lastly in the throat without flow of saliva. Scorbicular spordis मतलब कि जहाँ पर स्टमक प्लेक्सस है, बराबर, यानी कि स्टमक पीठ ऑफ द स्टमक, वहां की बात करें. वहां हमें जब पेशेंट को नॉजिएटिव फीलिंग वहां पर हो, देन इट इज अ क्वालमिश इन द
scorbicularis cordis. Scorbiculus cordis. Inclination to vomit just as if he had eaten something disgustingly sweet or greasy. Vomiting by inclination just as if he had eaten something disgustingly sweet or greasy. कुछ ऑयली या फिर ऐसी स्वीट कुछ खा लिया जो बिल्कुल पसंद, ऐसी फीलिंग के साथ उसको वॉमिटिंग हुई। कुछ खाया नहीं है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ऐसा खा लिया और वॉमिटिंग हो जाए, उस तरीके की वो। Profuse sweat after vomiting, bloody mucus. Vomiting followed by violent thirst. Poisoning के ये symptom है vomiting followed by violent thirst. Vomiting artificially excited only temporarily restored the parent from his state of symptom. Vomiting with anxiety, inclination to vomit with severe diarrhea, hiccup in the morning, hiccup in the morning, long continued hiccup after eating and drinking, that is in the bracket, so doubtful symptom. Aching pain in the scorbiculus cortex, which increased to tightness of the chest after 2.5 hours. जो भी आफ्टर आवर्स वाला जो जो भी सिम्टम है वो सब हनीमान सर के प्रूविंग के सिम्टम, बाकी सब ऑब्जर्वेशन है दूसरों दूसरों के, उनके फॉलोवर्स के सिम्टम है, उन्होंने उसको ब्रैकेट में वो नेम लिखी। In the scorbicular cortex, pressure as from a atom lying there, which soon afterwards extended to the hawk with a squeezing together sensation, as if she had injured herself by a strain as if stick. Cardialgia, all the symptoms observed by Roder were caused by applying the juice to a wound. देखो कैसे कैसे सिम्टम ऑब्जर्व किए कि एकोनाइट की रूट का जूस किसी वुंड पे, इंजर पार्ट पे अप्लाई करने से जो सिम्टम्स आए उसको भी ऑब्जर्वेशन में लिया। उसमें से ये रॉडर के सभी सिम्टम ऐसे ही ऑब्जर्व हुए। कार्डियल्जिया यानी कि साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ aching pain in the scorbicular cortex when sitting, walking, and standing. Pain in the scorbicular cortex as if it were swollen internally with loss of appetite and attacks of dyspnea. Pressy pain in the stomach like a weight. Pressy pain like a weight in the hypochondria. These are Hahnemann surface symptoms. Tensive pressy pain as from fullness or a weight pressing in the stomach and hypochondria. Say, contracting sensation in the stomach as from an astringent sensation of violent constriction in the hypochondria. एस्ट्रिंजेंट यानी कि ऐसा पदार्थ जो जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करवाए सेल पर, बॉडी टिश्यूज। तो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टिव थिंग से जैसे स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस तरीके का सेंसेशन। Aching pain in the stomach along with repeated vomiting and frequent stools, he always complains that he feels as if a cold stone lay in the stomach. Drawing in of the navel, especially in the morning when fasting, a burning in the umbilical region, burning sensation in the umbilical region, which ran rapidly over her, and extended the scorbicular cortex with a sensation of anxious beating
the shooting there. After some time, a rigor can ran all over the body with cessation of the hot feeling and of the painful sensation in the umbilical region. ये पूरी बात एक कोई एक पेशेंट में भी आ सकती है। तो आपको वो चिप कंप्लेंट का पार्ट जैसा पेशेंट बोल रहा है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो ये आपको उसी तरीके से लिखना है। Pinching pain in the umbilical region, compression of the navel immediately afterwards, intermittent aching in the navel like germs, gripping and clawing in the umbilical region above the navel. To the left, a painful sensation, painless sensation, as of something cold, forcing itself from within outwards, जैसे कोई ठंडी फिंगर अंदर से बाहर आ रही है, ऐसा नेवल में सेंसेशन। Aching in the region of the liver, aching in the region of the liver whereby the respiration is impeded, immediately thereafter pinching, belly ache, pinching counts में है question mark, thereafter belly ache यानी कि abdominal pain in the supra-umbilical region, supra-umbilical region में belly मतलब कि मसल का वो पेन है ऐसा, और उससे रेस्पिरेशन इम्पेयर होता है, मसल मूवमेंट कम हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो इसमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें एब्डोमिनल मसल्स भी काम कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएंगे, तो फिर रेस्पिरेशन में भी दिक्कत आएगी। मसल्स हमारे कब कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं? जब हम डर में हैं, बराबर। जब डर में होते हैं तो मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कैसे सिकुड़ जाते, उस तरीके की बात। तो वहां पर ये, और एकोनाइट के बारे में, मेंटल सिम्टम के बारे में सबको पता है, फियर ऑफ डेथ सुपर मोस्ट डिग्री का है, तो ये डर उसकी मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन करो। जॉन्डिस फ्रॉम द बोथ साइड्स टुवर्ड्स द नेवल, ड्रॉइंग पेन, ड्रॉइंग पेन भी एक कॉन्ट्रैक्टिव फीलिंग का ही पार्ट है। From both sides towards the navel, drawing pain in the abdomen, which are also produced by bending the abdomen together. आगे झुकने से, बराबर, बेंडिंग द एब्डोमेन करने से भी ये ड्रॉइंग पेन बढ़ जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। The epigastrium and hypochondria are occupied by a tense, painful swelling, swollen, distended abdomen like ascites, violent jerks, blows in the hepatic region that take away the breath. Some hours earlier than usual, a hard stool, for which he must strain much, rolling and rumbling in the abdomen with feeling of rawness, rolling and rumbling in the abdomen all night. A sort of fermenting, rumbling in the abdomen, पेट में गैस, बराबर, ये गैस की बात है। और उसमें दिक्कत कहाँ पर है? लीवर के साथ, हिपेटिक रीजन में वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये गैस हो रहा है। इन द बर्निंग, in the morning in bed, he cries out and does not know how to compose himself for intolerable cutting pain in the belly, and he tosses about in bed. सुबह में पेशेंट बेड पे ही रोने लगता है, चिल्लाता है कि भाई मुझे कुछ करो, पेट में कटिंग पेन हो रहा है, इंटॉलरेबल पेन, और वो जानता नहीं वो खुद को कैसे शांत कर सकता, और इससे वो बेड में टोजीज कर रहा है, ऐसे करवटें बदल रहा है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। Colicky, stretching, tensive and aching pain in the belly as from flatulence, गैस से ये दर्द हो रहा हो, ऐसा ऐसा दर्द कॉलिकी पेन होता है। On laughing loud, जोर से हंसने में, a sharp stitch in the right side below the lips, जैसे हम काफी हंसते हैं तो कैसे यहाँ पे दुखने लगता है साइड में, तो इस तरीके का है। लाउड हंसने से एकोनाइट को शार्प स्टिचिंग पेन होता है राइट साइड बिलो द रिब्स। ऑन इंस्पायरिंग डल स्टिचेस इन द लेफ्ट साइड बिलो द रिब्स, और लेफ्ट साइड में डीप इन या इंस्पायरिंग
इंस्पायरेशन करने से, ब्रीथ इन करने से, डल स्टिचेस पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिब, दैट इज बिकॉज ऑफ अंजाइन, अनस्टेबल अंजाइन। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एकोनाइट इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर हार्ट डिसीजेस। Drawing from the left side of the hypochondrium towards the back, the side of the abdomen is painful when pressed upon. Flatulent colic in the hypogastrium, as if he had taken a flatus producing spaghetti. Very hot flatus with a feeling as if only flatus were passing. Unexpected discharge of thin feces. फ्लैटस की ये फीलिंग के साथ कि सिर्फ फ्लैटस पास हुआ है, लेकिन उसके साथ थिन फीसिस डिस्चार्ज हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली। हार्ड स्टूल, हार्ड स्टूल अटेंडेड विथ प्रेसिंग, पर्जिंग, पर्जिंग मीन्स डायरिया, sometimes before, sometimes after the diarrhea, nausea and perspiration. Soft, small stool accompanied with tenesmus from 3 to 5 per dime. व्हाइट स्टूल एंड रेड यूरिन, ये कॉम्बिनेशन है तो फिजिकल सिम्टम का। व्हाइट स्टूल एंड रेड यूरिन, watery diarrhea, the hypogastrium is painfully sensitive to touch. Weakness of the bowels, such as is apt to raise from abuse of purgatives, pain in the rectum, shooting and aching in the anus, transient paralysis of anus, involuntary evacuation, involuntary diarrhea, flatulent hemorrhoids, piles की भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। Fluent hemorrhoids. During the diarrhea, copious flow of urine and moderate perspiration. डायरिया में यूरिन की फ्रीक्वेंसी फ्लो बढ़ जाता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो जाता है एंड मॉडरेट पर्सपिरेशन होता है। प्रेशर ऑन द ब्लेडर विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, प्रेशर ऑन द ब्लेडर विथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, दिस पेशेंट्स ब्लेडर वाज प्रीवियसली अनहेल्दी, पहले ये अनहेल्दी था। Suppression of urine with needle pricks in the renal region, diuresis, diuresis with profuse perspiration, frequent watery diarrhea with belly. तो आज हम